हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग एकदम मजे में होंगे। सो आइए नया टॉपिक लेते हैं। गेस व्हाट इज द टॉपिक फॉर टुडे? राइट बच्चों, आवर टॉपिक फॉर टुडे इज द लिव इन वाटर एंड व्हाट इज देयर इनसाइड? इनसाइड हम यस, वेरी गुड बच्चों, प्लांट्स इन वाटर, एनिमल्स इन वाटर, वाटर ऑल्सो ब्रीड्स डिसीजेस। सो आज इन सब के बारे में जानने वाले हैं आप सब। Right? Okay, so let's start with the warm-up exercise. The blue whale population in Antarctica was drastically reduced by commercial whaling, commercial whaling, which started in the southern Atlantic Ocean in 1904. Despite legal protection through the International Whaling Commission in the 1960s, illegal hunting continued until 1972. From about 1,25,000 whales in 1926, numbers were reduced to about 3,000 whales in 2018, which classifies the species as critically endangered on the IUCN Red List. Do you think that aquatic life is as important as human beings? जैसे हमारी जिंदगी बहुत कीमती है, ऐसे ही aquatic life भी बहुत important है बेटा. There are many plants and animals who live in water. Agreed? These plants and animals are called aquatic plants and aquatic animals, respectively. Water bodies like seas, oceans, rivers, lakes and ponds, etc. have a large variety of plants and animals. So, we can say that life on earth originated because of the presence of water. Plants in water? Many plants grow in water. They have special features that allow them to make their food through photosynthesis. Some plants such as water hyacinth and duckweed float on water. The whole plant including roots, leaves and flower floats. They may have spongy leaves that help them to float. So these plants are called floating plants. Some of these plants such as pondweed and duckweed tend to occur in ponds and in the backwaters of streams and rivers where there is little or no current. The water lily has light hollow stems that reach the surface of water and lives with a broad surface that helps it to breathe through its stomata. These types of plants are called fixed plants. Some plants grow under the surface of water. Some of these are kept in place by their roots fixed to the water bed, and underwater plants like some ferns and star grass have narrow, thin leaves with no stomata. Underwater plants are also known as submerged plants. The gases in the water are exchanged by these plants and they absorb carbon dioxide from water and release oxygen into it. This makes the surrounding water clean and oxygen rich. यही कारण है, यही बनाता है बेटा हमारी जो पानी, जो हमारे आसपास का पानी है उसे साफ भी रखता है और ऑक्सीजन रिच भी बनाता है. Animals in water, different kinds of fishes and several other animals such as crabs, dolphins, whales, seals and so on live in water. Fishes breathe through special organs called gills and they use fins for swimming as well as for balancing their bodies. Other aquatic animals like dolphins, whales, etc. breathe through their lungs. They come up to water surface at regular intervals to breathe. Turtles, seals and dolphins have or like flippers to swim in water, and water birds like ducks and swans have webbed feet which help them to paddle in water. Some animals live on both land and water. आप जानते हो धरती पे भी आप उन्हें देख सकते हो और पानी में भी देख सकते हो. These animals are called amphibians and these include the animals like frog, toad, newt and salamander. These animals have lungs to breathe on land and have moist skin that help them to breathe in water. They have limbs also that help them in swimming. Now how would you remove aquatic weeds without causing harm to aquatic life?
And what will happen to aquatic life if it is left to grow? Why? Water also breeds diseases. We have seen how water gives life to many creatures. It also gives life to diseases carrying insects like mosquitoes, and mosquitoes do not live in water, but water has an important role to play in their lives because most mosquitoes lay eggs in stagnant or collected water. यस बच्चों, जो मॉस्किटोज हैं वो पानी में तो नहीं रहते, बट पानी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो अपने अंडे पानी के ऊपर देते हैं ना, जो पानी रुका हुआ पानी होता है, कलेक्टेड वाटर जो होता है उसके ऊपर. दिस इज लाइकली ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मॉस्किटोज. मॉस्किटोज आर डिसीजेस कैरीज, आप सबको पता है बीमारियां लाते हैं. दैट इज वाई वी शुड नॉट लेट वाटर कीप स्टेगनेंट एंड अराउंड आवर हाउसेस और बिल्डिंग. तो बोला जाता है ना कि अपने घरों के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दे. यस, मक्खियों मच्छरों का खतरा रहता है. ईच मॉस्किटो एग डेवलप्स इनटू अ लार्वा दैट स्विम्स स्विफ्टली इन द वाटर एंड इन अ फ्यू डेज द लार्वा चेंजेस इनटू अ प्यूपा एंड देन अ मॉस्किटो कम्स आउट ऑफ ईच प्यूपा. The females of most species of mosquitoes have piercing and sucking mouth parts. जो फेमिनन लाइक जेंडर है इनका, जो फीमेल हैं वो उनके बहुत ज़्यादा लाइक नुकीला पियर्सिंग और लाइक उनका जो माउथ होता है, माउथ का पार्ट वो पियर्सिंग और सकिंग नेचर वाला होता है, जिससे कि बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है जो बच्चों. दे मस्ट हैव वार्म एनिमल ब्लड एट लीस्ट वंस बिफोर their eggs can develop properly. The males cannot pierce skin and they feed upon fruit and plant juices. Female Anopheles mosquitoes carry a single celled parasite that causes malaria when they bite a person. Dengue is caused by the bite of the Aedes aegypti mosquito which breeds in clear water. India-born British doctor Sir Ronald Rose was the first to discover that malaria was caused by the Anopheles mosquito in 1902. His discovery won him the Nobel Prize for Medicine. Let's have a look on causes and symptoms of diseases. Malaria is caused by a protozoan. It is carried by the female Anopheles mosquito when the mosquito bites a person suffering from malaria and the protozoa are sucked up with the blood. When this mosquito bites a healthy person, the protozoa are injected into the person's blood and cause him malaria. यही कारण है मलेरिया होने का, मच्छरों का काटना. When people have malaria, they usually have high fever with shivering on alternate days. रुक रुक के अल्टरनेट डेज पे, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के शिवरिंग होती है, बुखार आता है, यही सिम्टम्स है इसके बच्चों. अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डेंगू मे शो सिम्टम्स लाइक हाई फीवर, सीवियर हेडेक, मसल एक, जॉइंट पेन्स, नोशिया, आपको बार बार वोमिट जैसा फील होता है, वोमिटिंग, आई पेन एंड रैशेस. दीज ऑल आर सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. ओके, बी केयरफुल. प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेज, अब इनको रोकने के क्या उपचार हो सकते हैं? टू प्रिवेंट फ्रॉम डिसीजेज लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एक्सेट्रा, इट इज इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम मॉस्किटो bites. Here are some tips on how to keep your house diseases free. कैसे आप इन सब से बच सकते हैं? We should keep our houses and surroundings clean, one thing. Another thing is we should not let water collect around our house and fill up the pits. तो ये ध्यान में रखें, गड्ढे को भरने ना दे पानी से. जब बारिश आए उनको साफ करवाते रहें. आसपास घरों के पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इकट्ठे हुए पानी पर तो अपने अंडे देते हैं ना. We should change water from tanks, check discarded tires and buckets and clean water coolers regularly. अगर आपके घरों के बाहर या घरों में कोई कूलर लगे हुए हैं, उनमें पानी इकट्ठा हुआ है, या फिर आपके कोई टूटी फूटी बकेट्स हैं या टायर्स रखे हैं उनमें पानी कलेक्ट हो रहा है, तो ये सब चेक करें. ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों. We should use insect repellents to protect our cells. We can take the help of pest control services to make our house mosquito free.
केरोसिन ऑयल शुड बी स्प्रेड अपॉन स्टेगनेंट वाटर. यस, एक ये भी कर सकते हैं हम लोग, जहाँ पे भी वाटर हमारा इकट्ठा हुआ है वहाँ पे हम क्या करें, केरोसिन ऑयल की कुछ बूंदें डाल दें. आस्क द म्यूनिसिपल वर्कर्स टू ड्राई आउट puddles and fill up the potholes in your locality. If you have ever felt that mosquitoes bite you more than they bite your friends, you may be right. Mosquitoes do like certain kinds of people more. If you are a male with extra body fat and type O blood, mosquitoes would find you anywhere. Yes बच्चों, आपका ब्लड ग्रुप क्या है और क्या आपको मच्छर ज़्यादा काटते हैं? जिनका ब्लड ग्रुप O है वो, या फिर वो थोड़े से बॉडी फैट वाले हैं, तो उनको मच्छर छोड़ेंगे नहीं बच्चों. यस, आपका ब्लड ग्रुप क्या है और बच के रहिएगा अगर वो ब्लड ग्रुप है तो. ओके बच्चों, नाउ मलेरिया एंड डेंगू जनरली हैपन इन डैम्प एंड मॉइस्ट प्लेसेस. द मॉस्किटो मीनस यूजुअली लेसन बाय mid-October as mosquitoes do not survive very well in cold climate. तो सर्दियों में ज़्यादा आपको मच्छर नहीं काटते हैं ना. Quinine, a medicine made out of an extract of the cinchona tree, is used to treat malaria. If each one of us becomes cautious, we should be able to reduce the health problems caused by mosquitoes and other pests. Know how? How does pouring kerosene on stagnant water help in preventing the breeding of mosquitoes larvae? And now it's your turn, my dear children. आपने बहुत ध्यान से चैप्टर को सुना. आइए कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं. टिक द करेक्ट ऑप्शन. यस बच्चों, करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए आपको रीड करना पड़ेगा, ऑप्शंस देखना पड़ेगा एंड चूज द करेक्ट. यस. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स. चाहिए जो वर्ड मिस है, स्टेटमेंट को चेक करिए, उस वर्ड को यस देखिए और लिखिए. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. एज यूजुअल आपको क्या करना है, गलत स्टेटमेंट पहचाननी है अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर एंड राइट देयर एफ, अदरवाइज टी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. बच्चों कुछ क्वेश्चंस आपके चैप्टर से निकाले गए हैं एंड और इन्हीं आंसर्स, इनके लिए जो आंसर्स हैं वो भी आपके चैप्टर में छिपे हुए हैं. गो एंड गेट द आंसर्स एंड राइट इन योर नोटबुक. Beyond the zone, let's make a diorama of an aquarium, and this is a model that represents the scene in 3 dimensions. Okay, so just do it and have fun. Skill power, brainstorming. As duckweed grows rapidly and forms a mat-like layer on water, and it can help in water conservation. How does the waxy coating on the leaves of lotus plant help it? Glowing mind, what is the value of clean water? Discuss. And there are open drains in your society. People throw their household garbage in drains, which results in choking of drains. Do you support this practice and why or why not? Discuss. Yes बच्चों, जो आपके खुले ड्रेन्स होते हैं आपके आसपास की नालियों में, उसमें लोग कूड़ा भी फेंक देते हैं, फिर सारा चौक हो जाता है, पानी नालियों से बाहर आ जाता है. क्या करेंगे आप? इसको सपोर्ट करेंगे, और करेंगे तो क्यों करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे. Activity, paste pictures of different kinds of aquatic plants and animals in your scrapbook. Label each of them with their names and have fun. Enjoy बच्चों.